The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good morning, everyone. I am Ashutosh Bishnoi, and today we will be discussing. I am from Mahindra Manulife Mutual Fund. I head the business. Today we will be discussing a new product that Mahindra Manulife is bringing to the market, and the product essentially is a product that will help you to balance the investment assets that you have between equity and debt. It's a balance advantage fund. Like all good things in life, it's good to have a balance, just as in food, so also in investments. Before we start, let me give you a little bit of background about our firm. So, Mahindra Manulife Investment Management Private Limited is the company that manages the Mahindra Manulife Mutual Fund. We've been in existence for now 6 years, and we are owned 51% by the Mahindra Group via its listed company Mahindra Finance that owns 51%, and Manulife Investment Management owns 49% of the business. A little bit about these two companies. So Mahindra Finance actually is a company that is amazing. It is one of the largest non-banking finance companies in India. It focuses on rural and semi-urban customers, has about close to 7 million customers. It's been in business for 28 years and has assets in excess of almost 75,000, 80,000 crores. Mahindra Finance focuses on financing vehicle purchases. And the unique thing about its vehicle purchases is that it focuses on people who use the vehicle to make a living and then pay back their EMIs. It has nearly 1,400 offices all over the country and covers almost 400,000 villages where it gives loans. So it is also a company high on sustainability index of Dow Jones and ranked 25 among best places to work with in India. Amazing place, very far-reaching company. And then there is, of course, Manulife. Manulife Investment Management is actually an interesting company. It is the leading financial services group headquartered in two locations in the world, Toronto and Boston. In Toronto is the headquarters for the world's life insurance business, and Toronto and Boston is the headquarters for the asset management business. That's all it does. It manages money in life insurance and it manages assets in mutual funds. Altogether, over 150 years it has existed. In the US, this company is better known by its name, John Hancock. Outside of the US, it is called Manulife everywhere else in the world. It has more than 37,000 employees, more than $1 trillion of assets. Now, to give you a perspective on $1 trillion, that's about one third of the GDP of India. That's the size of this company. It has over 3 crore customers and a very strong presence in Asia Pacific, where via its Singapore subsidiary, it has made an investment in our company. The reason why we did this chart is to set a very clear expectation in your mind on what equity markets in India do. This chart starts in 1979 because that's the time at which we started to measure the market. I must tell you, India is one of the oldest equity markets in the world, probably 150 years old. But it was in 1979 that Sensex at the value of 100 was started. And today that Sensex is at about, it went to 60,000 and thereabouts. So it's grown almost 600 times in 42 years. That's a return of 16.5% per annum, within which there are all kinds of fall downs. Harshad Mehta scam, advent of the initial dot-com bubble and its burst, the 2008 global crisis, financial crisis of subprime loans in US, a high inflation and the 25% market fall in 2011, 2015 when global markets and China stocks crashed and crude prices fell, and of course the 2020 and 2021 pandemic. But if you see the trajectory, it just goes all the way up. You need to remember that to get really rich, have 600 times the money of what you invested, it takes 16.5% CAGR return to get you there over a period of time. So that's the normal in the markets in India. Now let's speak a little bit about the economy in India.
So our markets have been upsurging. I can't remember a better time. मतलब मुझे याद नहीं इससे बेहतर टाइम जबकि इकोनॉमी को ग्रो होने की अपेक्षा थी है. It is the highest growth that we are going to see over the next 4 to 5 years in the Indian economy, upwards of 10% per annum, maybe more. What is the reason? Reason is a simple कि जितना भी रिफॉर्म गवर्नमेंट ने कोशिश किया है वो अब धीरे धीरे काम आने लगा है. बहुत लोगों ने काफी क्रिटिसिज्म रिफॉर्म्स का किया था, लेकिन दो तीन रिफॉर्म के बारे में बात करूंगा. आई विल स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट अ कपल ऑफ रिफॉर्म्स ओनली. नंबर वन, सबके हाथ में एक टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए, सबके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए. जनधन and Jandan accounts and a mobile connection for all has transformed the digital economy of this country. पैंडेमिक की वजह से जरूर उसमें ज़्यादा स्पीड आई, लोग जल्दी से ऑनलाइन हो गए. ई कॉमर्स हैज टेकन अ ह्यूज अपस्विंग इन इंडिया. और ये तब है when only 25% of the users in the phone users in the country are using smartphones. यानी ई कॉमर्स फोन पे सिर्फ 25% आबादी कर सकती है. 75% of the population still has to get a smartphone which is e-commerce enabled. तो जब ये 100% हो जाएगा तो यू विल सी द इकोनॉमी इन अ कंप्लीटली डिफरेंट जोन. आज की तारीख में यू आर बाइंग एवरीथिंग डिलीवर्ड टू यू. वो आपके घर पे, आपके रूम पे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ somebody from some company of a delivery type, फूड वाला हो या ग्रोसरी वाला हो, जो कुछ भी हो, it is coming to your house. And important thing is because it is being delivered, it is being picked up and delivered to your house, उसमें टैक्स पेमेंट हुआ है. जीएसटी हैज बीन पेड, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हाउ वी यूज टू बाय. हम लोग बाजार जाते थे, दुकान वाले से सौदा करके पैसा देके घर में सामान ले आते थे. कभी बिल लिया, कभी नहीं लिया. ज्यादातर तो लोग रोज की रोजमर्रा की चीजों में on everyday on things, people used to not really look for a bill. But now that bill is automatically generated. The revenue to the government is high and the government's ability to spend on reforms is high. ये हम ही लोग कर रहे हैं by transforming the economy digitally. This is one part. But और सोचिए इसके बारे में, who are the people who are coming to your house, जो कि वो डब्बा लेके आते हैं, या कोई स्विगी, टोमेटो या जो कुछ भी, जिस भी कंपनी से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी तो आते होंगे. तो ये जो लड़के लड़कियां हैं, these are young people, some of them are also old. They don't hold one job. They are called gig economy workers. ये दिन में उबर भी चलाते हैं, डिलीवरी भी करते हैं, ये शाम को किसी पार्टी ड्राइवर के रूप में भी काम करते हैं, या जितना भी जो भी काम इन्हें मिले. यहाँ तक कि इसमें कई टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं जो कि ई कॉमर्स कंपनीज के जरिए, थ्रू द ई कॉमर्स कंपनीज, दे गेट कॉन्ट्रैक्ट टू डू प्लम्बिंग इन द डे, इलेक्ट्रिशियन वर्क्स इन द डे, पेंटिंग, जो कुछ भी काम है. मतलब तमाम सारे ऐसे काम हो गए हैं जो कि ये यंग लोग करना चाहते हैं. क्यों करना चाहते हैं? ये काम तो ये पहले भी कर सकते थे ना. They could do this earlier also. Why are they now more keen? Because now that e-commerce companies making their payment for the work that they do. पहले क्या होता था, आपने उन्हें बुलाया, प्लम्बिंग का काम हुआ नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ, आपने कुछ आधे पैसे दिए, फिर बोला बाद में आना, जब मैं when my work is finished I will see how it works and then I'll pay you, or you did not pay. So these people have to chase their money a lot. आज की तारीख में पैसा इनके जनधन अकाउंट में तुरंत आ जाता है, काम हुआ, पैसा हाथ में. Not surprising कि so many young people are wanting 2 or 3 jobs. किसी को कोई परमानेंट जॉब की जरूरत ही नहीं है, 4 काम करेंगे. Can you imagine the income we are generating for these people, the young people? They are able to educate themselves, their families, and grow into a better future. दूसरी बात, PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये जरूर किसी कॉर्पोरेट दिमाग की उपज है. Certainly some corporate person has thought about this. It's an incentive, simple incentive program. आप टेलीफोन बनाते हैं, टेलीकॉम से शुरू हुआ था. You making telephones in India, great. So here is first of all, for setting up a new unit, your income tax for your unit is only 15%, 15, lowest in the country for anybody except really low level in individuals, low income individuals. 15% तो टैक्स हुआ. फिर ऊपर से if you set a target and you exceed the target, let's say by 20% or 25%, government is giving you cash incentive. यानी वो कंपनी के स्ट्रेट प्रॉफिट में जा रहा है. टेलीकॉम से शुरू होकर टेक्सटाइल, केमिकल, ऑटोमोटिव, सब जगह ये पीएलआई इंसेंटिव अब इस्तेमाल होने लगा है.
इसकी वजह से क्या हो रहा है? What is happening is because of this, more and more companies from across the world want to produce in India. It is so attractive to produce in India. It's more profitable. And we are likely to become a large production center for the world and creating infrastructure and jobs for people of India. तो इस तरह की चीजें जब इकोनॉमी में होने लगती है, स्टेबलाइजेशन ऑफ एनपीएस, बैंकिंग सिस्टम को 3 साल पहले अगर आप देखते हैं तो लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग ये क्या हो गया हमारे बैंक्स को, एंड लुक एट इट नाउ, इट्स अ कंप्लीट टर्न अराउंड. Recapitalized banks are know how to manage. They are managing their NPAs well. Bad bank बनाया गया है, and the bankruptcy code is in place. यानी कि जो आदमी आपको पैसा नहीं देता है उसकी कंपनी को आप बैंकरप्ट कर सकते हैं, आप अपना पैसा वापस ला सकते हैं. ये हुआ है, काफी तेजी से हो रहा है. And therefore stabilization of NPA in banking system is coming. Banks are becoming stronger. You have strong banks, strong manufacturing, strong service economy, and you have low inflation and low interest rate. इससे ज़्यादा और किसी इकोनॉमी को ज़रूरत नहीं होती है तेज़ी से ग्रो करने के लिए. एंड वी बिलीव दैट all of the benefits of this will come not only to the PSU sector but also to the private sector, and we are seeing a fantastic economic growth coming up. लॉन्ग टर्म आउटलुक अगर आप देखेंगे, जीडीपी इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2022 जो मार्च में खत्म होगा, लुक एट द लाइट ब्लू लाइन, दैट्स द प्रोग्रेस. That is how it's going up. 21 was up, 22 is going to be higher, and I think 23, 24 corporate profits as a percentage of GDP is only going up. Gross capital formation, यानी कि ये जो पैसा corporates अपनी capacity build-up में लगाते हैं, जो capital बनाते हैं, that was coming down steadily. From FY20 it has begun to go up. और ये इतना नीचे आ चुका है कि ये एक ज़माने में 35-37% होता था. Now it is now at 26-27%, and with the profits coming in, the next cycle that will begin is capital formation. With the incentives in place for producing, more and more capital is going to be formed in India, which is good for the structure of the economy. मार्केट का क्या आउटलुक है? जब मार्केट कैप बढ़ता है तो एक बफेट इंडेक्स देयर इज समथिंग कॉल्ड, यानी कि the GDP of a country and the market cap of a country over a long term is exactly the same number. यानी अगर जीडीपी इंडिया का 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स है तो मार्केट कैप 2.9 के आसपास ही होगा. It can go to 150% or it can come down to 85-70%, but on the long term आप ये चार्ट देखिए, we have been as high as 155-160% in 2007-8, and then fell down to 50% in 2008 where global financial crisis आया. आज की तारीख में we are now at about 120%. दुनिया भर में this is true. All the economies of the world follow this trajectory. As the GDP rises, the market cap will follow. And if we are looking at 50% growth of this economy over the next 5 years, the market cap is likely to rise even faster. So इस तरह की अगर बात करेंगे तो we also should talk about कि listed जो profit after tax GDP का रेशो ये 2-decade low से अब increase हो रहा है. यानी corporates are now making greater profits as a percentage of GDP than they used to. The trend is catching on fast. आप देखिए 1.6% से already it is a trajectory of 4.5%. इस सब से इकोनॉमी में क्या एक्टिविटी है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स आर कॉजिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. लोग बाहर से आके इंडिया में प्रोड्यूस करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं. डिफेंस गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, व्हाइट गुड्स, मोबाइल, फार्मा, सब. ऑल इट्स अ सेल्फ रिलायंट कंट्री दैट्स इन द मेकिंग. फॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने बात की, एंड आई स्पोक अबाउट हाउ बेटर जॉब्स आर हैपनिंग. What does all this mean is that 1992 we were not even a top 10 economy of the world. We were nowhere. In 2008 also we didn't make it to top 10, but we saw China climb up to top 3. Before 2030, we are confident that in the next 5 to 6 years, India is going to be the number 3 economy of the world. Already we are at number 5 or 6. I think right now between us and Japan, which is number 3, is UK, France, and Germany. And I'm confident that we will see us crossing those numbers and go all the way up to number 3 in our lifetimes, in your lifetime. And you should profit from this. When GDP rises and you're number 3 economy of the world, it stands to reason that you will have the number 3rd largest stock market in the world.
ना आप पूछेंगे कि इतना सब अच्छा है तो ये कंफ्यूजन क्यों है, ये मार्केट गिरता क्यों है, ये इतनी टेंशन क्यों होती है। जरा सी बात सुनी कहीं कि अरे वहाँ रेट बढ़ गए तो मार्केट गिर जाता है, या वहाँ पैंडेमिक की कोई न्यूज़, नए वेरिएंट की न्यूज़ आई तो मार्केट गिर जाता है। सो लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज बाय दिस बिकॉज न्यूज़ क्या है ना, पहले तो सिर्फ जब मैं छोटा था तो रेडियो सुन ऑन करना पड़ता था न्यूज़ सुनने के लिए, फिर टीवी आया, फिर टीवी में तमाम सारे न्यूज़ चैनल आए। अब तो क्या है कि आप बच ही नहीं सकते हैं, मतलब वो आपके दिमाग में तमाम तरह की न्यूज़ चैनल के अलावा व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, कहाँ-कहाँ से लोग कुछ भी भेजते हैं तो दिमाग कंफ्यूज होने लगता है। यू लुक एट डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट, वैल्यूएशंस की न्यूज़ आती है, वॉलेटिलिटी, मार्केट ड्राइवर्स, पॉलिटिकल न्यूज़, कंपनी अर्निंग्स, यानी एज़ अ इन्वेस्टर कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई करें क्या? सो ऐसे टाइम में जब हमें कॉन्फिडेंस है कि मार्केट बढ़ने ही वाला है, बट आपको शायद कभी-कभी यू मे हैव some challenges in your mind about near-term problems in the marketplace, in the news, in the economy. So you may want some balance. कई दफा you make a mistake कि न्यूज़ सुन के आप बेच देते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, and then you realize that it has gone up, then you go and buy it again. So what did you do? You sold low and you bought high. Whereas क्या करना चाहिए कि you buy at a low price and sell at a higher price. तो इसलिए इसमें तमाम सारे बैलेंसेस की जरूरत होती है, और ये सब सोचने के लिए ही हम लोग हैं, वी आर देयर एज एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स एग्जैक्टली टू डू दिस, टू थिंक अबाउट व्हेन यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी मार्केट्स इन via a mutual fund, and when you should not be investing, and when you should be getting out and investing instead in a debt market, and how much should you invest in each at any point in time. This is the business that we do. You should not try to do it yourself. I'm not saying you should not, I should say if you do it yourself, you will find it's a time consuming process and it takes a lot of expertise and intelligence to understand these things. If you are working, you may not find the time. So leave it to experts. There is a whole bunch of things that goes into it. Looking for balance, therefore, is important. लाइफ में बैलेंस जरूरी है, एंड यू शुड लुक टू अस टू फाइंड दैट बैलेंस फॉर यू। इसीलिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ बैलेंस एडवांटेज योजना। ये फंड ऐसा होगा विच विल गो 0 to 100% इन इक्विटी और 0 to 100% इन डेट, यानी इस फंड में दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हमें ये डिस्कशन रहेगा कि आपका पैसा हम कब, कितना, मार्केट के किस हिस्से में डालें, इन विच पार्ट ऑफ द मार्केट should we put how much money and when to withdraw and when to go into the other market. That is what this fund will do. This is already open and available to you from 9th of December, and the NFO is closing on 23rd of December. HDFC Securities के जरिए आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। कैसे इन्वेस्ट करते हैं हम ये पैसा, यू मे आस्क कि भाई आपके पास ऐसी क्या खासियत है, आपके पास कैसी क्या इन्फॉर्मेशन होती है, व्हाई डू यू नो, हाउ डू यू नो व्हेन टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट. So we apply data from the market for making these investment choices. It is called the process of asset allocation, meaning how much of your asset should you allocate to which part of the market, when, and how. So four things we look at this. Number one, what is the market valuation? Meaning what is the what is the expectation that market will get valued at? Because remember, in our market, expectations is what drives the market. Secondly, corporate earnings, how much will they grow by, or will they not grow? So earnings growth, because earnings is what decides how much will you value the company at. Thirdly, what is the interest rate? Why is interest rate important? Because interest rate is the cost of money. It's the basic cost of money in any economy. तो अगर cost of money आज की तारीख में आपको 5% पे पैसा मिल रहा है, then how much will you get out of investing it in equities is an important question to ask. तो उस पे बात आती है earning yields पे. Earning yields is nothing but the earnings that companies make as a percentage of their share price. So अगर कंपनी की अर्निंग एक साल में 40 रुपए है और शेयर प्राइस उसका 400 रुपए है, you will say the earning yield is 10%. That is extremely important to know.
एंड फाइनली कि भाई मार्केट में जो पैसा आ रहा है सारे जरियों से, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम डोमेस्टिक, एवरीवेयर, फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स, where is that money going? How much is going to come? And where will that money go? Look at the lead and lag indicators. इन चार चीजों को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ डालना है, कितना डालना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अर्निंग यील्ड एंड 10 ईयर जीसेक यील्ड, पिंक लाइन जो है वो 10 ईयर गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड है, और द डार्क लाइन इज द अर्निंग यील्ड. आप देखेंगे that these two lines move exactly opposite of each other in tandem, perfect tandem. They are inverse, ये एक दूसरे के exactly opposite चलती हैं. और जैसे इनमें से गैप होता है, आपको मालूम है, as the gap बढ़ता जाता है, you know where to invest your money, and you know when the gap begins to close, जब वो पास आने लगता है, then you again want to reallocate. क्योंकि जब जहां yield ज्यादा दिखती है वहीं पैसा डालना चाहिए. करेक्ट, दैट्स लॉजिकल. मैंने वैल्यूएशन की बात की. इफ यू लुक एट द पी रेशो, which is it is the metric used for valuations, ट्रेलिंग और फॉरवर्ड का जो गैप होता है वो एक्सपेक्टेशन गैप कहलाता है. अगर अर्निंग्स कंपनी की बढ़ेगी तो वो एक्सपेक्टेशन गैप कैसे क्लोज होगा कि वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, पी बढ़ जाएगा. और अगर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से कम आएंगी तो गैप कैसे क्लोज होगा कि वैल्यूएशन गिर जाएगा. तो ये गैप को, इस गैप को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है, एंड दैट इज व्हाई वी लुक एट दैट. दिस इज द अर्निंग यील्ड, दिस इज द अर्निंग फोरकास्ट. जो सबसे नीचे वाली पिंक लाइन है लेफ्ट में, दैट इज 2019 की जो अर्निंग फोरकास्ट जब शुरू हुई थी नवंबर 17 में, तो 588 था, खत्म हुआ 480 पे. 2020 की फोरकास्ट शुरू हुई थी 694 पे फरवरी 2018 में, और खत्म हुई अगस्त 2020 पे एट 453. सिमिलरली 2020 की तो आपको बात याद है कि फोरकास्ट बहुत अच्छा शुरू हुआ था, लेकिन जब पैंडेमिक आया तो सब कुछ नीचे आ गया था फरवरी से, पर फिर भी थोड़ी रिकवरी हुई. लेकिन जो 2022 की फोरकास्ट आ रही है, ऑलरेडी वी हैव ओनली फिनिश्ड हाफ द ईयर. 794 फोरकास्ट थी, 721 तक हम पहुंच चुके हैं, and likelihood is that we will cross the forecast, which means earnings are coming back strongly. उसी बेसिस पे 735 जो कि 2023 का एस्टिमेट, अगस्त 20 में शुरू हुआ था एस्टिमेट, हमें एक्सपेक्टेशन है दैट कंपनीज विल डू बेटर देन एस्टिमेट. सो अगर हमको लग रहा है कि अर्निंग्स बेटर होंगी, तो ये जो यील्ड गैप है, ये जो वैल्यूएशन गैप है, ये प्राइस बढ़ने से क्लोज होगा. तो ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इक्विटी के प्राइसेस बढ़ेंगे. लेकिन आप कहेंगे ये तो नीचे आ रहे हैं. यस, दैट इज बिकॉज लिक्विडिटी, जो कि फाइनल इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आज की तारीख में ये सितंबर तक की लिक्विडिटी है, जो थिन ब्लू लाइंस हैं जो ऊपर ऊपर की तरफ जा रही हैं, दैट इज द लिक्विडिटी प्रोवाइडेड बाय यूएस फेड टू द यूएस गवर्नमेंट. और ये आप देखेंगे कि एनएससी का भी जो ऑरेंज वाली लाइन है, डायरेक्ट कोरिलेशन होता है यूएस फेड की लिक्विडिटी से. तो बाकी तो ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि दैट इज नैस्डैक एंड देयर S&P 500 का ट्रैक है वहां पे कर. लेकिन सबसे नीचे वाला जो ऑरेंज वाला निफ्टी का है, वो ध्यान से देखिए, इट इज फॉलोइंग द ट्रैक ऑफ लिक्विडिटी सपोर्ट बाय फेड टू द गवर्नमेंट ऑफ यूएस. तो हमें ये देखना जरूर पड़ता है. तो आज की तारीख में, बिकॉज दैट लिक्विडिटी इज कमिंग डाउन, आपको मालूम है देयर इज अ टॉक अबाउट टेपरिंग लिटिल बिट, तो क्योंकि वो थोड़ा कम हो रहा है इसलिए मार्केट थोड़ा नर्वस है, एंड द वैल्यूज आर फॉलिंग स्लाइटली. तो इस बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं कि डेट में जाएं या इक्विटी में जाएं. आई स्पोक अ लॉट अबाउट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आउटलुक ऑफ द मार्केट. हमें लगता है कि द वे द मार्केट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से, आई एम अ ग्रेट बिलीवर कि 5 साल नहीं होंगे, इट विल नॉट बी 5 years, एंड यू विल सी द सेंसेक्स एट 100,000. It is close to 60,000. It crossed 60,000, and I think it will not take 5 years for it to go to 100,000. Having said which, the journey to that 100,000 is not going to be a smooth, nice journey. Volatility तो इस मार्केट का हॉलमार्क होता है, ये जरूरी होती है हमारे मार्केट में, क्योंकि वैल्यूएशंस भले ही रिच हों, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ और अर्निंग्स आएगी, the valuations will become more attractive. थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आएगा तो we'll be able to buy more easily. So I think
आउटलुक हमें बहुत अच्छा लगता है। जहां तक एक्चुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात चलेगी कि हाउ विल वी एक्चुअली इन्वेस्ट, कि कौन से स्टॉक्स में डालेंगे, वी आर नॉट कीपिंग एनी लिमिटेशन कि हम लार्ज कैप में जाएंगे, मिड कैप में जाएंगे या स्मॉल कैप में जाएंगे। वी विल बी वेर एवर देर इज अर्निंग पॉसिबिलिटी। जहां भी ग्रोथ और अर्निंग की पॉसिबिलिटी दिखेगी, वी फॉलो अ प्रोसेस taught to us with the help of Manulife. It's called the GCMV process. उसका मतलब होता है growth, management quality, cash flow generation and valuation. These four things matter to us in every stock. And हम हर वो stock को खरीदेंगे इस fund में भी which comes positive and provides a good valuation gap between its current price and potential valuation basis on this GCMV framework. यहाँ तक मार्केट कैप की मैंने बात की, यू वी विल नॉट हैव अ प्री डिस्पोजिशन। ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि हर एक मार्केट कैप का वक्त आता है। यू कैन सी दैट स्मॉल कैप हैज डन वेल इन सम इयर्स particularly 2008 जब फॉल हुआ था, then obviously the large cap did very well, mid cap did well in certain times. So you have to watch and see. Don't go by capitalization, go by the stock's potential. That is the way we manage our money. डेट के साइड में भी एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि थ्रू आउट द 3 year डेट हाइट अस। जो मार्केट डेट मार्केट में जो भी प्रॉब्लम्स आई, not even one problem touched our portfolios because we have a process of how to select debt and how to invest. इसको हम रिस्क गार्ड प्रोसेस कहते हैं। इसमें फाइनेंशियल डेटा के अलावा हम क्वालिटी ऑफ बिजनेस, रेटिंग्स, क्रेडिट मॉनिटरिंग और कन्वेंशनल अप्रोच के अलावा हम सोशल मीडिया पल्स ऑफ इश्यूअर्स, उनका मार्केट सेंटिमेंट, उनके प्रोफाइल ऑफ लेंडर्स, प्रोफाइल ऑफ डायरेक्टर्स, हम सब कुछ देखते हैं। Of course, we also do active credit monitoring. So uski wajah se we are very confident that the way we will invest now in the debt part of this fund, we will be looking at liquid debt and money market instruments, and we'll follow a duration strategy जिसमें yield optimization की strategy रहेगी। हम लोग long term के लिए अभी invest नहीं करेंगे। We will look at taking the least credit risk at this point in time, because आज की तारीख में rates are low and rates will tend to rise over the next 1 year, which will then hurt the portfolios. So we will not play a very long duration portfolio in this fund at this point in time. So here is a fund, 0 to 100 equity, 0 to 100 debt. So you will say, how will we manage the taxation of this? So taxation के हिसाब से we will endeavor to give you a equity oriented fund जहाँ हमेशा 65% technically equity का orientation रहेगा, यानी कि even though in pure equity we may be 30% sometimes, but बाकी 35 will be made up by the way of using arbitrage, so that you are not worried कि भाई ये equity का taxation है कि नहीं. It will always be equity taxation, but we will look at how to reallocate at optimal regular intervals. At least on a monthly basis we will review. On a weekly basis we will continuously review the asset allocation, and then we will look at all those 4 parameters जिसके बारे में मैंने बात की. किसके लिए फंड है? फर्स्ट टाइमर, यस। सो जहां तक मेरा सोचना है, इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु हैज नो टाइम टू डिसाइड कि मैं डेट में पैसा डालूं, इक्विटी में पैसा डालूं, कहां डालूं, and you've never invested in the market, then this is a perfect fund for you. This is a staple investment that you should make for yourself, because an expert fund manager will then decide where to put your money. There are many investors among yourselves who have made a lot of money in equity markets but are now cautious because you don't want to take too many chances with the money you made. For you, this is a good option. And of course, for the smart investors, they always buy into balance advantage funds. So this is the presentation I had for you. If you have any questions, I'll be happy to take. Thank you, Mr. Bishnoi, for the information. Dear participants, to ask any questions or query, please click on the question mark icon on your screen and type in your questions. I repeat, please click on the question mark icon on your screen and type in your questions. Mr. Bishnoi, we have a first question. He's asking about the NFO period, the last dates, and any minimum or a maximum investment amount that has any restrictions on that.
So I think the minimum amount would be 500 rupees in the SIP, but I think 1,000 for for the for the regular lump sum investment. The period is we close the NFO on 23rd of December with the close of business hours. It is already open, the NFO. It's available to be subscribed in. Okay. We have a question from Mr. Rajesh Kashyap. He's asking, what is the risk profile of this fund? So the risk of this fund is moderate risk, क्योंकि it will be all the time investing in both of the asset classes. So it is a moderate to high risk is the risk profile of this fund. Here, our next question is asking, is there any restriction for NRIs to invest in this fund? So NRIs arising out of Canada, US, UK, your best advice would be that to invest from an Indian account in India. Because we can accept anybody's money, but it has to be invested in India from an Indian account. Again, we have a question from Mr. Rajesh. He's asking, what should be the mode of investment? Should it be a lump sum investment, or should at a later stage a SIP kind of a mode? Which would you recommend in this particular fund? I am a strong believer of the fact that a balanced advantage fund is your staple product. ये आपके portfolio में होना जरूरी है. So take a reasonable investment to start with. And for example, अगर आपके दिमाग में है कि over a period of 1 year you want to create a corpus, for example, I'm taking an example, कि आपको लगता है कि आपको 50,000 रुपए का एक corpus invest करना है over 1 year, then I would say you start with investing 25,000 rupees now, and then invest 2,000 rupees a month as an SIP over the next year or whatever period of time. So then you will have invested 50,000. This is an example. You could have much larger amounts to invest, but creating a corpus of this fund as a staple in your portfolio, I think is important, because then it takes away the worries कि अभी मैं equity में डालूं या debt में डालूं. You don't have to think about that. We have a next question from Mr. Aman Gupta. He's asking, he wants to invest for 10 years. Are there any restrictions on withdrawal? Any lock-in period? No, there are there is no lock-in period. It's an open-ended fund, and you can invest for any period of time you like. I mean, 10 years is a very good horizon to invest for, but you can take your money out whenever you feel like. There is no lock-in period. We have one follow-up question is asking about invest for a short period, say like a year or two. Is it a good idea to invest in this fund? A lot of people are taking the view that in the near term, because of volatility in the market, they will put their money in a balanced advantage fund for a year or two, and then maybe go full into equity. This is something I've had a lot of discussions with many of the investors who are equity investors, and they're saying, "Chalo, let us rest for a little while, let the market stabilize, and then I'll come back full into equity. In the meanwhile, let me put the money in balanced advantage Yojana," and that's not a bad strategy at all. Okay. We are getting a lot of questions on how do you invest in this fund. I'll take that question. Just for information, if you want to invest in this NFO, please log in into your trading account. That is your HDFC net trading account with your trading credentials. There's a tab called mutual funds. Under the mutual fund tab, there's NFO, and you can select the NFOs that you want to choose the amount and invest. It is very simple. Just 3-4 clicks. Just select the name of the fund and the amount you want to invest, and you are done. If you're not comfortable with login to internet trading, then you can call our RMs or our customer care numbers. They will guide you in detail, or they'll take your order on your phone also. I would encourage you to actually do online also. Of course, HDFC Securities service levels are very high. So I think you can call them, you can speak to them on the phone.
they make so many options available for you. So I would encourage all of you to use any of those and make this investment. Yeah, as Mr. Bishnoi rightly said, online is a much better option to invest. It's completely in your control and it's very easy. You just need to log on to your trading account, and trust me, it's just 3 or 4 clicks and your choices. I think we have answered most of the questions that we have here. Before we close, do you have any closing remarks, Mr. Bishnoi? Yes, I do. I would like to say, I don't know who are the people. I imagine there is a lot of young people also. That India is a story that is unfolding very fast on the world. हम लोग रोज मेहनत करते हैं, आप और मैं, इस इकोनॉमी को सॉलिड बनाने के लिए। ये जो मैंने जीडीपी ग्रोथ दिखाया, जो मैंने समझाया कि कैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ने वाली है, ये हम लोगों के काम का ही फल है। वी आर द वंस हु आर प्रोड्यूसिंग दिस। और अगर आप इसी ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा समझिए कि जो स्टॉक मार्केट है ना, वो आपका ईसॉप है। वो ईसॉप ले लीजिए, एक फंड, अच्छे फंड में इन्वेस्ट कीजिए। उस ईसॉप में आप ही मेहनत कर रहे हैं, आप ही इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग उस मेहनत का फायदा स्टॉक मार्केट के जरिए ले रहे हैं। आपको भी लेना चाहिए। थिंक ऑफ इट लाइक दैट, कि दिस इज द ईसॉप ऑफ योर हार्ड वर्क एंड यू शुड टेक इट व्हेन इट्स अवेलेबल। So all the best. Please make an investment, and this is a good time to invest in a balanced advantage fund क्योंकि market volatile है and अभी opportunities हैं कि we can make a good portfolio and give you a decent return. Thank you. Thank you, Mr. Bishnoi. So I think we have come to a close of this webinar. Thank you everybody for joining. Thanks.